Suprabhatam. Now in standard 7 Sanskrit subject, I will learn new topic Koruka. The third lesson is Koruka. Koruka means who is healthy, who is without any disease. Okay. But before that, I will tell you one story. Okay. I will tell you summary. There is one bird. It goes here and there in the sky. It asks only one question. Who is healthy? Who is healthy? Koruka, koruka. Kaha nirogaha bhavati? Who is without any disease? Paksi dwaram dwaram atati. It goes door to door. It moves door to door. And asks only one question. Who is healthy? Who is healthy? But nobody gives answers. The bird becomes upset. And now he goes to the forest and sits on a tree. And on that tree, one Rishi sits under a tree. And at that time, the bird also asks only one question. Which question? Who is healthy? Who is healthy? And Rishi Vagbhat listens this question and he gives answers. He replied, what is the answer of who is healthy? The Rishi replied, those who takes balanced meal in a proper manner and then who takes meal according to a season always remains healthy. The bird becomes satisfied and he goes down to the Rishi and later on he goes to his own place. Okay, I hope you will understand the story very well. Now I will turn paragraph wise. Okay. Ekah paksi asti means there is one bird. Ekah means one, paksi means bird. Okay. Ekah paksi asti. Asti means is. There is one bird. Sah akase atra tatra gacchati. Atra tatra means here and there. And gacchati. Gacchati is in present tense. I hope you understand the table of present tense. Mi vaha maha सी थह थ ती तह अंति means अन्य पुरुष एक वचन. गच्छति means अन्य पुरुष एक वचन. सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति. He goes here and there in the sky. सह पुनः पुनः means again and again. Repeat करते. सह पुनः पुनः वदति. वदति means speaks. कोरुका. It speaks again and again. Which question? Koruka means who is healthy. Kaha nirogah bhavati. Kaha means who. Who is without any disease. Okay. Who is without any disease. Now, paksi dwaram dwaram atati. The bird moves door to door. यहाँ पे द्वारम द्वारम. What is the meaning of द्वारम? Door. The bird moves door to door. एकम एव प्रश्नम पुच्छति and asks only one question. Which question? Koruka means it asks only one question. Janaha bhasam kurvanti. Janaha means people and uphasa means उसका मजाक उड़ाते हैं. People ridiculously. कोपी उत्तरम न ददाति. Nobody gives answers. Which question? Koruka means who is healthy. Nobody gives answer. The bird moves door to door and asks only one question. People laugh it. Nobody gives answers. Now what happened? Paksi nirasah bhavati. Okay, he didn't get the answer, so he becomes upset. The bird becomes upset, disappointed. Now, saha vanam gacchati. Vanam means forest. He goes forest. He goes into the forest. वृक्षे उपविशति च. वो कहाँ पे बैठता है पक्षी? वृक्षे means on the tree. It goes in the forest and sits on a tree. वृक्षस्य अधः
अधः मीन्स अंडर, उसके नीचे। वृक्षस्य अधः वैदर्भी वाग्भट्टः अस्ति, और उस वृक्ष के नीचे कौन बैठा है? उसे वैदर्भी वाग्भट। पक्षी पुनः वदति, द बर्ड आस्क्ड अगेन विथ क्वेश्चन, कोरुका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरुका? हु इज हेल्दी। पक्षी पुनः वदति कोरुका कोरुका, the bird asks again and again, who is healthy, who is healthy, iti Vagbhat shrunoti, and Rishi Vagbhat listens this question. Then now what happened? Saha vadati, Rishi Vagbhat replied, okay, hit bhuka, mit bhuka and rutu bhuka. Hit bhuk means balanced meal, ओके। मित बुक मीन्स प्रॉपर क्वांटिटी में हमें बैलेंस मील लेना चाहिए। और ऋतु बुक मीन्स दोज हु टेक मील अकॉर्डिंग टू अ सीजन, जो सीजन के हिसाब से हमें फ्रूट खाना चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ऋषि भगवत क्या बोलते हैं कि दोज हु टेक बैलेंस मील इन अ प्रॉपर क्वांटिटी एंड दोज हु टेक मील according to a season who always remains healthy. The bird becomes happy. Why? Because he gets the answer. Which question? Koruka. Rishi Vagbhat give reply. Those who take balanced meal in a proper quantity and those who takes meal according to a season always remain healthy. सः एव निरोगः भवति मीन्स who always remains healthy. संतुष्टः पक्षी, संतुष्टः means satisfied and पक्षी means bird. ऋषि समीपम् आगच्छति, the satisfied bird comes to the ऋषि, वो ऋषि के पास जाता है। सः ऋषि नमति, he goes to the ऋषि, वो ऋषि को नमन करता है। अनंतरम, अनंतरम means later on. स्वस्थानम means its own place. गच्छति means going. बाद में वो क्या करता है पक्षी? Later on it goes its own place. I hope you will understand this lesson very well. Okay. First you write this whole line and write down the translation also. First whole line and write down the translation. In this way you have write all the paragraph with translation, and I hope you all have the textbook. So you write the glossary 5 times. Okay. एकः से लेके गच्छति तक. Okay. 4 line and write the translation. Okay. Morning students, I hope you understand 4 lesson very well in standard 7. Okay, now we will come into exercise. First exercise, pronounce the following words orally. आपको क्या करना है? पहले बोलना है वैदर्शी, श्रुणोति, हितबुक, ऋतुबुक, अनंतरम, स्वस्थानम, को रुक। आपको क्या करना है? You have to write the copy
दिस वर्ड्स। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स ओरली। आपको ओरली भी बोलना है एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो। नाउ एक्सरसाइज 2, फाइंड आउट द एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मींस द प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मी परस्मैपद पद में आता है ना, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। और यहाँ पे जो एक्शन वर्ब है वो अन्य पुरुष एक वचन के, अन्य पुरुष एक वचन पूर्व के लेसन में जो भी अन्य पुरुष एक वचन के जो भी वर्ब है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल गच्छति। ओके, पूर्व के लेसन में जो भी वर्ड है आप लिख सकते हो गच्छति जिसमें पीछे ती हो। उपविशति, ददाति, अस्ति, भवति, करोति, अटति and पृच्छति। ओके, if you find another this type of action verb अन्य पुरुष एक वचन, you have to write in your notebook with clear handwriting. Now come into exercise 3. Answer the following questions in Sanskrit. Okay, पूर्व का जो लेसन, okay, I have taught you. First question, पक्षी किम वदति। Okay, पक्षी क्या बोलता है, पक्षी किम वदति। मैंने बोला ना, there is one bird, it goes here and there in the sky and it asks only one question. Which question? पक्षी किम वदति, पक्षी वदति ओरुक। ओरुक का मीनिंग who is healthy. Now second question, पक्षी वने पुत्र उपविशति। पुत्र मीन्स यहाँ पे पुत्र का मीनिंग where. ओके, पक्षी वने पुत्र उपविशति। ओके, पक्षी वने पुत्र मीन्स where. वृक्षे उपविशति, पक्षी कहाँ पे जाके बैठता है, वृक्ष पे, on the tree. पक्षी वने पुत्र का मीनिंग where मीन्स वृक्षे उपविशति। Now third question, वृक्षस्य अधः कः अस्ति। उसके नीचे कौन बैठा है। ओके, अधः मीन्स अंडर। Who sits under the tree मीन्स वृक्षस्य अधः कः। कः का मीनिंग यहाँ who. ओके, who sits under the tree, तो वृक्षस्य अधः वैदर्षी वाग्भट्टः अस्ति। Who sits under the tree? Answer, वैदर्षी वाग्भट्ट. Now fourth question, ऋषि किम वदति। Okay, किम means what. ऋषि क्या बोलता है, ऋषि वदति, वदति मीन्स स्पीक्स। यह मिथुकः मीन्स बैलेंस मिल्क, मिथुकः मीन्स प्रॉपर क्वांटिटी, ऋतुभुकः means those who takes milk according to a season. अस्ति सः ओरुकः भवति means those who takes balanced milk in a proper quantity and those who takes milk according to a season who always remains healthy. Now fifth question, संतुष्टः पक्षी कुत्र आगच्छति। कुत्र, यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, कुत्र का मीनिंग where. संतुष्टः का मीनिंग satisfied. सेटिस्फाई बर्ड वो कहाँ पे फिर जाता है, तो संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम मीन्स जो वाग्भट ऋषि है ना, ऋषि के पास जाता है। संतुष्टः पक्षी पुत्र का मीनिंग वेयर, वेयर मीन्स ऋषि समीपम आगच्छति। नाउ एक्सरसाइज 4, फॉलो द इलस्ट्रेशन एंड फ्रेम सेंटेंसेस। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, भिक्षुकः ब्लैंक गच्छति। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, गृहम। हमें क्या करना है, भिक्षुकः गृहम ओके, भिक्षुकः गृहम का गृहम गृहम ऐसे दो बार लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट शृगालः क्रमति, तो यहाँ पे वनम है तो क्या होगा, वनम वनम। राइट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वनम वनम।
ओके। सेकंड नृपः मीन्स राजा, गच्छति कहाँ पे जाता है, नगरम। ओके, तो नगरम का आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से गृहम गृहम, तो फिर क्या होगा, नगरम नगरम। ओके। थर्ड साधु विहरति। ओके, वंडर। तीर्थम, तीर्थम का क्या होगा, तीर्थम तीर्थम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सरसाइज 4. पक्षी, 4 पक्षी अटति। द्वारम, द्वारम मीन्स डोर एंड अटति मीन्स मूव्स। द्वारम, इसका आंसर क्या आएगा, द्वारम द्वारम। ओके, now we come into exercise 5. Follow the illustration and frame sentences. हमें sentences बनाए, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं। पक्षी गच्छति, उपविशति च, का मीनिंग यहाँ पे एंड। ओके, यहाँ पे पक्षी, वनम को क्या करना है हमें, वनम, ऐसे डॉट रख देना, पक्षी वनम गच्छति, एंड वृक्षः का वृक्षे। ओके, नाउ फर्स्ट छात्रः गच्छति, उपविशति च, यहाँ पे शाला और आसनम है, तो शाला का क्या होगा, इसके हिसाब से वनम, तो शालाम। और आसनम का यहाँ पे वृक्षः का वृक्षे किया है, तो आसनम का आसने। ओके, नाउ टर्न इनटू एक्सरसाइज 2. अधिकारी गच्छति, उपविशति च, कार्यालय मीन्स ऑफिस, एंड आसनः मीन्स चेयर। अधिकारी ही, तो यहाँ पे वनम, शाला का शालाम, कार्यालय का कार्यालयम। उपविशति च, आसनः, यहाँ पे वृक्षः का वृक्षे। ओके, तीन द्वारम, वनम का वृक्षः का वृक्षे, आसनम का आसने, तो आसन का क्या होगा, आसन दे। I hope you understand all of this exercise very well. First you write the exercise in your handwriting, it's clear.